participation in games and sports is basically to see whether outside your studies how you spend your time, right? आप कुछ खेल कूद में भाग लेते हो कि नहीं लेते हो? आर यू हैविंग अ बैलेंस काइंड ऑफ अ लाइफ और खाली पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी कि खाली खेल खेल में ही वो कर रहे हो? तो इफ यू हैव played certain games, write them in order of priority, right? Something that you have been doing recently, right? Team games and individual games. Have a mixture of team and individual in case you have both, right? So team games, football, hockey, cricket, volleyball, basketball, etc., right? Individual games can be athletics, swimming, squash, tennis, badminton. If you have played both, have a mix of them. रिप्रेजेंट करो उसको, जिसमें आपने ज़्यादा अच्छा किया है उसको आप पहले लिखो, उसमें आप ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट? नाउ दिस ड्यूरेशन मीन्स कि आपने कोई गेम खेला है, भले ही आपने कोई अपना स्कूल या डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट ना किया हो, बट यू हैव प्लेड द गेम फॉर रिक्रिएशन, फॉर कीपिंग योरसेल्फ फिट, और यू हैव प्लेड इट कैजुअली, राइट? So you can play it at a competitive level where you represented your school or district or something like that. You have excelled in that game, right? Or you have played it just in sports spirit, game spirit. या आपने हाउस के लिए खेला है, कुछ लोग क्लास में खेलते हैं, इंटर क्लास या जो भी है. So write it there. It can be for 2 years, it can be 3 years. Certain set, and then there is a whether you are represented school, district, university, and other, right? This other means, a lot of people play for the clubs also. They play in the society, they play in the village. ठीक है? So आप उसको according लिखो, उसको other मत लिखो. You say village or club or whatever. Specify, right? Don't say other. And outstanding achievements. No, you can be a man of the match, you can be best player, you can have one gold medal, something athletics कर रहे हो या कोई भी चीज़ है, right? Winners in the tournament, runner up. Brief में ये लिखो कि क्या है, किस लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, something in case you have something, but at least you should be prepared to answer this correctly, right? बहुत सारी चीज़ें आप लिख दे दो PIQ में, लेकिन उसको आप जब बोल रहे होते हो तब वो भूल जाते हो, राइट?